above the 10th level. So this is what you can do today. And coming back to your questions now, I think what I am done with the presentation. मैंने आप लोगों को ब्रीफ कर दिया है इसके बारे में. तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो now the platform is open for questions. So if any of you have any questions, kindly go ahead and mute yourself and please ask the question. So Shakil Munawwar, yeah. So there's two questions. It's still kind of vital. Say आपने कहा कि the 700 students are presently sponsored and going to colleges. Do you have any information as to how many have dropped out, and if they are dropped out, how we can help them to make sure they continue through the 3-year program? And number two, like somebody else asked, that how do we know that after 3-year graduation, what are they doing in future? Are they continuing with the higher education? Are they going to the employment? So that we get more satisfaction to whatever we are contributing is going into the full use. And the third thing is that I would suggest that if there is a need to establish maybe 1 or 2 person who can do these kinds of stats, I think we may be able to contribute additional money to support that effort, because it may be too much work for one or two volunteers to manage. Anybody else has that information or can share their opinion about this? जी, पहला तो ये है कि पहला सवाल आपका था कि जो पढ़ रहे हैं उनमें से हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं, कितने उसमें से ड्रॉप आउट होते हैं तो कितने होते हैं. तो वी रिमेन कनेक्टेड विद ऑल द स्टूडेंट्स, जिनको भी हम भेजते हैं उनसे हम कनेक्टेड रहते हैं. तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मॉनिटरिंग. फर्स्ट इज फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ. कॉलेज मैनेजमेंट से हम टच में होते हैं. कॉलेज मैनेजमेंट कीप्स ऑन sending information about the students studying there, attending classes or not attending classes. So if anyone drops, we know. Second is we appoint for each class, we appoint a monitor. And from among the students, we appoint a monitor. रिजवान भाई इसको कैप्टन कहते हैं. तो उनके हिसाब से कैप्टन अपॉइंट होते हैं हर क्लास के लिए, and they keep in touch with us and they actually inform us. Then as I told you that the sponsors remain connected. So because the sponsors remain connected, therefore sponsors also know. Because what we suggest all the sponsors of the students that they should actually not send any further installment unless they get the receipt of fees paid to the college, number one. Number two, semester results. Semester exams have happened. Then the students must share the semester results with their sponsors as well as with us. Then there is a fourth level of monitoring from Patna, where we have our volunteers plus one paid manager who also looks after all of this and he monitors. Now, from there, how do we make sure that students they go into jobs? First of all, we target the courses. Number one, we select the courses which have the best possibility of employment. That's number one. Number two, there is a mechanism जिसके बारे में कि मैं रिजवान भाई को बताऊंगा. रिजवान भाई जो है वो he is connecting all the students through online courses, जिसमें कि वो ऑनलाइन उनकी मेंटरिंग और उनकी गाइडेंस करते हैं. स्पॉन्सर तो करते हैं. उसके अलावा जो है ऑन बिहाफ ऑफ बिहार अंजुमन एंड रहबर, रिजवान भाई फ्रॉम कतर, he is organizing all those kind of courses to motivate the students, to increase them in knowledge, to upgrade their knowledge, to make them more employable in terms of communication skills as well as technical skills as well as Islamic education. कुरान की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी क्लासेस करवाते हैं. I would request Rizwan bhai to brief the attendees on this one. हाँ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम रिजवान हुआ. अब मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ. यहाँ पर जो शकील भाई ने बताया कि हम लोग जो है हमारी फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है हमारी, तो यहाँ पर हम लोग सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का क्लास भी करा रहे हैं. और मुख्तलिफ जैसे जो पैरामेडिकल के बच्चे जो हैं, पैरामेडिकल के बच्चों को हम लोग जो है जैसे डॉक्टर से कनेक्टेड है. हमारे बहुत सारे जो हमारे मेंबर्स जो हैं डॉक्टर्स हैं, और जैसे हमारे कतर में डॉक्टर रिजवान भाई होते हैं, कोई मिशिगन में हमारे डॉक्टर जरगम होती हैं. तो उन लोगों से कनेक्टेड है. बजाते वो लोग आते हैं, क्लास लेते हैं बच्चों के, पैरामेडिकल स्टूडेंट जो उसको क्लास लेते हैं वो लोग. मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोग भी इस तरह से कनेक्ट हुई है और बच्चों को कुछ स्किल देना चाहते हैं, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का या पैरामेडिकल से रिलेटेड या इंजीनियरिंग फील्ड के जो है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई है,
जैसे कोई लैंग्वेज है, पाइथन है या कोई भी लैंग्वेज जावा है या कोई भी है, उससे रिलेटेड कुछ भी आप इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गिव देन यू आर मोस्ट वेलकम, हमसे कांटेक्ट करें। और हम जो है बच्चों के पास जो है जो हमारे हमने जो ग्रुप बनाया हुआ है बच्चों का, किस बच्चों को क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से उनका जो है डेवलपमेंट क्लासेज जो रेगुलर चल रहा है, फ्राइडे सैटरडे को जो क्लास चलता है सॉफ्ट स्किल का या पैरामेडिक्स के लिए या डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, है ना, तो उसी मतलब उसके हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वॉलंटियर्स की थोड़ी कमी है, स्टिल वी हैव बहुत लोग हमारे साथ ज्वाइन है, यूएस से ज्वाइन है और इंग्लैंड से ज्वाइन है, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे और जो है टेक्नोक्रेट भी बहुत सारे ज्वाइन है, तो दे आर हेल्पिंग अस, बट स्टिल वी नीड वॉलंटियर, हम लोग को वॉलंटियर की जरूरत है जो कि और बच्चों को जो है, क्योंकि जैसे शकील भाई ने बताया 700 बच्चे हैं, 700 बच्चों को कैटर करना इज नॉट वेरी इजी, तो हम लोग और वॉलंटियर मिलने अगर उनको कोच करने के लिए या उसको उसकी सॉफ्ट स्किल डेवलप कराने के लिए या उनके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की और ग्रूमिंग कराने के लिए, तो इट विल बी ग्रेट हेल्प। तो यही हमारी यही पैटर्न है कि हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज जो है लेकर के जो है हम लोग जो है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट क्लासेस या जो उनको जो भी उनकी नीड है उसकी जो है उसके हिसाब से जो है हम लोग जो है बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं। तो मकसद वही है कि कैसे ग्रूम करना है, कैसे जो है किल भाई ने जैसे बताया कि हमारा टारगेट क्या है, तो उनको एक्सेल कराना है। एट द एंड ऑफ द डे दे शुड बी बंदे, जैसे मनोहर भाई ने कहा कि हो क्या रहा है, एट द एंड ऑफ द डे हाउ वी कम टू नो, तो हमारा टारगेट वही कि कैसे बच्चे जो है ना एट द एंड ऑफ द डे एक्सेल करें। तो when they come to the right from the first year we are after them, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर अब आते हैं तो उनको इतना अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रूम कर दे रहे हैं, है ना। अब सोचिए इस लेवल के डॉक्टर जो है लैब किए हुए और यूएस फैमिली वाले डॉक्टर जो है उनको उस पैरामेडिक को पढ़ा रहे हैं। जब आप कभी आए हमारे क्लासेस को देखें आप, है ना, तो यू विल रियली बिलीव दैट समथिंग इज हैपनिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी मच ग्रूम्ड इन दैट लेवल। आप सोच रहे हैं आप डॉक्टर रिजवान से लेवल का या डॉक्टर अरशद के लेवल का जो है डॉक्टर जो है एक पैरामेडिक बच्चियों को पढ़ा रहा है, तो माशाल्लाह दे आर उनको कॉन्फिडेंस है ना। तो और मतलब असेसमेंट भी हम लोग कराते हैं कभी कभी, जैसे डॉक्टर इम्तियाज साहब को बुलाते हैं लंदन से, दे असेस वो असेस करते हैं बच्चों को, असेसमेंट जो है होता है। तो ये बहुत अच्छा, बच्चे और स्ट्रांग होते हैं उससे। हमने अभी जो है बहुत सारे जो है रमजान क्विज अभी कराया था हम लोगों ने। तो इस तरह से बच्चों में जो है एक एम्बिशन और जो है जोश और वलवला जो है जग रहा है। तो हम यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द मॉनिटरी हेल्प, आप लोग जो है हमारे साथ जो आए और स्टैंड करें हमारे वॉलंटियर करने में, कुछ कोर्सेज में या कुछ जैसे मनोहर भाई जैसे लोग आए बच्चों को जो है कुछ जो है एम्बिशियस बात ही बताएं, अच्छी बातें बताएं। हम लोग बताएंगे तो यूएस से इतने सक्सेसफुल आदमी हैं आप लोग, देखो मनोहर भाई जो है ऐसे वहाँ यूएस से बात कर रहे हैं, तो दे विल बी ऑफ कोर्स दे विल उनकी जो है बॉडी लैंग्वेज और जो है चेंज करती रहेगी और कर जाएगी इंशाल्लाह। तो यही हमारा मोडस ऑपरेंडी है, वी आर वर्किंग ऑन दिस एट द एंड ऑफ द डे बच्चे जो है स्ट्रांग बने। और तो शकील भाई, any more questions please, any more questions, because we would like to I think Shakil bhai, I think Muazzam Arif, I think just a suggestion, right? I think going back to what Farhan bhai was also asking, and even Hassa was also alluding to that aspect. So all of this is fine, but I think if you look at from today's perspective, again, I mean, I come from a technology background, and in fact, somebody in the chat, I think Sarvab bhai was saying that he'll be able to help train people in the software engineering portion. So I'll be willing to contribute some time to that, right? But I think in today's world, I think the website, biharanjuman.org, so that has to be like the centerpiece of all of these information. Maybe it's right now sitting with, scattered in, I mean, no doubt about it, right? Bihar Anjuman is a unique organization, is doing great work, but maybe the information is so scattered somewhere, right? So we have to come together, maybe together with Aim Khan Sahab and Rizwan Sahab, all of your collective wisdom, right? And maybe put it into a way it's presentable to everybody and it's accessible to everybody, right? So that, these questions doesn't need to be, not everybody is going to be on these Zoom calls, right? But I think the website, I mean, people can browse themselves, and I'm willing to contribute, help in building up that website. Maybe let's get help from people who are already doing diploma in computer science engineering. So maybe like a more practical user of what they are going to learn. Maybe they help build the Bihar Anjuman website as a great place to, where we can share this all information, maybe tracking information, or maybe this semester fees receipt and all that stuff. So again, I'm sure you will find some more willing individual contributors who will be willing to share some time as well. So maybe let's take some effort in this direction and अमजद खान भाई के साथ कोऑर्डिनेट कर लें। अमजद खान भाई जो है वो अभी डेटाबेस, ही इज ट्राइंग टू डेवलप अ डेटाबेस जो कि टेस्टिंग स्टेज में है, जिसमें कि जो हमारे स्टूडेंट्स जिनको आप सब स्पॉन्सर कर रहे हैं उन बच्चों का डेटाबेस होगा। सो वी विल ट्रैक देम राइट फ्रॉम देयर डे वन until they get into jobs.
तो जॉब्स में भी उनको एज एलुमनी जो है we'll be able to track. तो exactly and then it becomes like a cycle, right? I mean, like people who are graduating out, maybe they're going to work in some other organization, then they help come Yes. give back to Bihar Anjuman, maybe drag some more people out there. But Yes. so the point is that that information has to be collected somewhere, and inshallah, I'm sure, I think we were chatting on the WhatsApp group as well, so I'll reach out to Amjad bhai and Rizwan bhai, you as well, I think, right? Just to kind of Amjad Khan, whatever contribution, if you need online some. Amjad Khan साहब जो है ना वेबसाइट ऑनलाइन डेटाबेस डेवलपमेंट में लगे हैं, तो आप उनके साथ कोऑपरेट करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम जल्दी हो जाएगा और कुछ लोगों को और जोड़ लेंगे. जी बिल्कुल इंशाल्लाह. जी, any more questions please? जी, anybody? शकील भाई मेरी बात आ रही है? शकील भाई आ रही जी. मनोवर भाई का एक क्वेश्चन अभी तक रह गया मेरे ख्याल से. जैसे कि वो कह रहे हैं कि ठीक है 12 उनके पास जैसे 12 हैं, अगले साल उनके पास माशाल्लाह 5 और ऐड हो गए, और अगर उनका ही एग्जांपल लेके मैं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी के लिए भी हो सकता है कि अगर कोई उनके साथ कनेक्ट होने की लायबिलिटी नहीं मेंटेन करना चाहता है, वो चाहता है कि ठीक है मैं स्पॉन्सर तो कर रहा हूँ लेकिन मैं आई डोंट वांट टू ट्रैक एवरीथिंग कि वो क्या कर रहा है, क्या रिपोर्टिंग क्या है, उसकी फीस पे हुआ कि नहीं. तो हम लोग को ऐसा मॉडल तैयार कर सकते हैं क्या कि चैप्टर बेस किसी आदमी को जिम्मेदार जी मॉडल ऑलरेडी है. डेटाबेस तो ठीक है, डेटाबेस तो आप कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो हो जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा. बट राइट नाउ आल्सो वी हैव एटलीस्ट 3 लेयर्स ऑफ सपोर्ट मैकेनिज्म. पटना से मैंने बताया कि पटना से जो है वो ये मैकेनिज्म ऑलरेडी है. जो हमारे स्पॉन्सर नहीं ट्रैक करते हैं उनको पटना मैनेजमेंट करता है. चैप्टर्स करते हैं, चैप्टर्स हर चैप्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है. जो भी चैप्टर्स फंक्शनल चैप्टर्स हैं वहाँ पे ये मॉनिटरिंग बहुत आसानी के साथ हो जा रही है, और चैप्टर्स 1-2 लोगों को इसकी जिम्मेदारी दे देते हैं, और चैप्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ स्पॉन्सर्स अगर डायरेक्ट कनेक्टेड है तो भी चैप्टर जो है डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, तो भी पटना डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, तो भी हम लोग मॉनिटर्स के जरिए से जो वहाँ कैप्टन ईच क्लास में कैप्टन उसके जरिए से हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं. तो वी हैव डिफरेंट लेयर्स ऑलरेडी. बट जब आप डाटाबेस डेवलप कर देंगे देन वी विल हैव अ मच बेटर, जिसमें कि हम लोग जो है वो मेंटर्स भी जो है वो उसके अंदर कर सकते हैं कि ईच मेंटर जो वॉलंटरी मेंटर करने के लिए लोग आएंगे आगे, उनको हम लोग डिफरेंट फील्ड्स के स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर दे सकते हैं, so that each mentor is actually having 2, 3, 4, 5 whatever mentees. So this model is there. उस मॉडल को जो है वो करने के लिए कुछ वॉलंटियर्स और चाहिए होंगे, कुछ और हमें बस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए होगा जिसमें आप लोग लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो सिलसिला आगे बढ़ेगा. वैल्यू एडिशन की जरूरत है. इन ईच स्टेप वी नीड वैल्यू एडिशन. उसमें आप लोगों की मदद होगी तो इंशाल्लाह वो सब जो आगे हो जाएगा. Shakil bhai, can I make a comment? Yes, sure. So I have a question, Shakil bhai. जी बिल्कुल. So I think in the past, because I have a question on the logistics and mode of money transportation, you transfer from here to US to Patna or Delhi. So I think in the past, Bihar Anjuman had tied with Imar Sharia Bihar because they had the FCRA, and I believe now Rabber is our organization registered in India. Do you think Rabber got FCRA? No. Rabber does not have FCRA. That's why we actually we don't want the sponsors' money to go to any organization. We want money to go directly to the institution, directly to the student. So far as possible, directly to the student. Otherwise, directly to the institution. That's our whole idea. You can send it via Western Union. Western Union is not bad. You could send it via Western Union. Yes, Farhan. Yeah, I think just a session. I think there are many apps, like say for instance, I personally use something called as walee. So I mean, you could pay. It's like an individual contribution, so that doesn't fall under the purview of CRN and all of the regulations, etc. Because you're directly paying tuition fee for something, right? So I mean, and you could translate very easy. It's like very seamless. Give it a try. असल में why no NGO? Because NGOs in India are being banned. मुस्लिम NGOs पे तो आफत आई हुई है. जब वो एमनेस्टी इंटरनेशनल को नहीं छोड़ते, आपको कैसे छोड़ने वाले हैं? तो ये मॉडल, हमारा मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल है बनस्बत दूसरे एनजीओस के जो कि FCRA अप्रूव है. FCRA का तो धीरे धीरे सबका कैंसिल करते चले जा रहे हैं. एमनेस्टी को नहीं छोड़ा तो हम लोग क्या छोड़े? तो बहरहाल सो दिस मॉडल नहीं, असल में शकील भाई मैं ये सोच रहा था कि स्पेशली इन यूएस फॉर एग्जांपल इफ दे नीड टैक्स बेनिफिट्स, राइट? सो I work for IMF now, so we have 501c, so we can have tie with IMF now and money can be sent there, but we want some organization जिसका FCRA हो और उसको हम यूटिलाइज कर सके. जी IMF ने भी चैनलाइज किया है.
पहले जो है वो रबर कोचिंग सेंटर्स 3 रबर कोचिंग सेंटर्स को अलीगढ़ अलुमनी एसोसिएशन वाशिंगटन डीसी was sponsoring. So they had this difficulty of transferring money. So IMF came in between, and they actually started transferring that money from the Aligarh Alumni Association to their Patna representative, and from their representative it was being given to the teachers. If you can pay directly to the salaries from your organization, for example from IMF now, if you can pay directly to an individual, then it is the best one. Then you can pay the salary of a teacher and you can claim tax benefit. I do not know that. But organization to organization is now becoming tougher and tougher every day. But organization exactly that's the struggle we have. Organization to individual is something which nobody can stop. So even organization to individual can work like this. IMF has your organization, Javed bhai, your organization IMF has already supported us many years. उसके बाद जो है वो चूंकि अपने खुर्शीद मलिक साहब जो है वो चूंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था with his increasing age. It was becoming very difficult for him. Now because you guys are so much involved, so younger people can actually work on this logistics much better, and they can help us in this matter. But still we still want this connectivity, direct connectivity to the students. If you are sponsoring, for example, if suppose IMF decides tomorrow to sponsor 20 students, then we would rather like you to actually send installments of these 20 students directly to those 20 students. That will be the best thing that we prefer. Then you will remain connected. What we want is you to remain connected. Then your own, skills, your own skill sets, your own logistics, your own channels, your own mechanisms. Whatever you're doing for others, you can do for these 20 also. And then you take charge of these 20 students. So our burden gets reduced. So we have more people, joining the channel. So channel mein aap ek link ban gaya, and then you become a more valuable link, and we have a lot of chance to learn from you guys, who add value to the whole entire system of logistics. I get it. So do we have any accountant in India which helping us with rubber? Mostly volunteers. We will help. Okay. One manager. We have only one manager, one paid staff only for all these works, which is worth a lot. Sure. But only one manager. But we don't leave the accounts to him. We actually want our chapters to do the accounting. We want our volunteers to do the accounting. He keeps records for the office, because our office is also given by Dr. Khurshid Malik Sahab of IMF. So Dr. Khurshid Malik Sahab's own personal property, he has given us office there with internet connection, with telephone connection. Everything is paid by him, because we believe in everything to be free to us, So ground पे हम लोग खर्च करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा तो खुर्शीद मलिक साहब, he was very generous to actually. असल में कुछ मुश्किलात आ रहे हैं, तो I know you guys have been fully involved, so you must be aware of FCI new rules and the complexity and how you guys overcoming them. Yes. So I was just really curious to know. जी. उसके अलावा भी कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे कि लास्ट कोविड के टाइम में राशन बांटने के लिए जो है वो अलीगढ़ अलुमनी एसोसिएशन, दे वांटेड टू सेंड सम मनी थ्रू सम FCRA approved organization. So we got in contact with a Hyderabad based FCR organization who helped us in this matter, and the money was actually, when they said they will give ration to I think 100 families, then we added something like 500 to that. We topped up, and then we provided 600 to 700 families all the ration. तो हम लोगों को तो FCRA चैनल की जरूरत नहीं थी, but उनको जरूरत थी, तो उनकी जरूरत की वजह से we got connected to one FCRA organization in Hyderabad. But we don't prefer that. We prefer the direct route, you connecting with the beneficiary directly. That's what we prefer. Sure. But of course, when this cannot happen, then of course we take help of other organizations. Ji, any further questions, please? Shakil bhai, can I talk? Sure. Yeah, go ahead. Okay, yeah. I've got a couple of comments and then followed by a question. My comment is, I met you a couple of times, but I never had the real opportunity to listen to your talk. I've been to your house once, if I recall, in Anjuman once, and it was the first time I had an opportunity to listen to your entire discourse today. And I'm very happy and delighted that I see a very a clarity of thought and process that you reflect in your communication, and so this is very good. And you being a leader of this whole thing have taken up the brilliant initiative and have really made some remarkable impact, so to speak.
And that was my comment, because I've never really had that opportunity to listen to you completely. And today was the first day I did, and I'm really happy that you do seem to have an absolute crystal clarity of thoughts as to how you have designed this whole organization and how come this organization works in a manner and fashion whereby there's little to no overheads, which is very brilliant, because most of the organization have 30 to 40% overheads. And that's, I guess, one of the brother was talking on the same line. In terms of the second comment was, I didn't quite really understood what you meant in the graph that you showed, because the y-axis was not really corresponding to the bar side, and I was very confused. I'm a man of details, so I'm sorry to be picking up on minute details. And plus, what's the distinction between sponsorship versus scholarship in that graph? Are you talking about this graph or some this chart or something, some other chart? Yeah, you showed some chart and you mentioned right about sponsorship. Can you see our screen right now? No, I cannot see it on the screen. What do you see right now? I don't see anything. Oh yeah, do you see? Go back to previous slide. Okay. Previous slide. Go. Sure. There's another slide that you'd shown about sponsorship, and yeah, I think this one, right? Okay. So what is this one? Yeah, this one, right? Exactly. 735 and 250. What's the distinction between what's 735 and I believe 250 is a scholarship, right? 250 is current year. 250 will be current year. We'll take 250 students. We'll sponsor. We need a sponsorship of a scholarship to these 250 students this year. So from previous 2 years, we will have 485. And so they will add up to 735. So we will have 735 for next 1 year. Then we'll add, then one batch will leave, another will join. So then the number will increase. It is like that. Red in the, whatever you see in white with red background. What is the blue thing? What is 640 and 240? Blue, what's that? Blue background is the total that we will be having once these 250 new students join. Okay. Okay. All right. Because something like 200, something like these 240, 200, 3 years back. Go back to 3 years back. 200 students will leave this year, right? So 200 students, when they leave, 250 join. So the number will be 735. Like it was 635 currently, 640 previous before that, 582 before that, like that. These are the totals at any point in time, because we are considering 3-year courses, So in 3 years of courses, you have, so total number will be 735 once we add these 250 numbers, and 200 previous numbers or 240 will graduate, will pass out. These 200s of 2020 will graduate, and 250 will join. So the number will go to 730. Yes, please. I got it now. So my question, because I noticed your entire inspiration, which is quite telling. Your entire inspiration of this philanthropic work started from the Such a Committee report that you have very frequently cited. And as you know, the Such a Committee report was a summation of entire data of the country over several months or years, with hundreds of consultants involved. So one of the things that comes out of that report is the good amount of research that they have done in terms of the trajectory of the Muslims, the current plight of the Muslim. And therefore, one of my questions that I think I had raised at the very outset of the WhatsApp group is, where is the trajectory of these kids who have been sponsored, or students who have been sponsored? And I think that a part of the question was already addressed, that we're going to collate a database as to track down where these students are, and if they could become future sponsors of the likes of the people down the road. And I think that would be a really powerful tool to encourage more folks to step in and be an active participant. And one thing really important, I think, which you really hit home, is to connect the student with the sponsor. And that's a really, really important element, because I had also done something similar back in 2004 or 5 when I went to Afghanistan, Khyber Pakhtunkhwa, and I built up 13 water wells. And I made it a point that everybody who was donated get to see what their money had literally made an impact. And this really motivated 4 more people to come on board and did something similar project. So I think the idea of connecting the recipient with the donor is a great idea, which is very unlike different organizations.
And I think I salute you for that initiative, and that's where my comments and questions ends. Thanks, Farhan. So now, if we are done with the questions, then can we now ask our attendees come forward and commit to a sponsor. Few students from diploma engineering, few students from Bihar, or whatever they can. Few RCCs to be sponsored, whatever you want. I've shown you the different sponsorship that are required. I can take the initiative. I can take the initiative and tell you, because I'm from healthcare background. I have a doctorate degree in healthcare. So anybody with the paramedics or somebody who wants to get into med school or anything of that sort, or paramedics, if that's med school is too high of a deal, I'm willing to take up 2 students under my wings and try to mentor them. And mentorship is primarily more inspirational thing for me to come on board. I mean, giving money is the easiest thing. If you have money, you can easily give. Mentoring people is far more time consuming, and that requires commitment. And I'm willing to do too. Thank you very much, Farhan bhai. Farhan bhai wants to sponsor 2 students of paramedical, inshallah. I will note down this one. Amjad bhai, if you can note down also, it will be great, so that we don't miss it out, right? Actually, we also note down your preferences, because you mentioned paramedical, so I'm noting down your preference for paramedical students. Okay. Yeah, because I can only, the reason why I mentioned that is because I could actually mentor somebody in that area. That's a great I idea. wouldn't be able to mentor anybody in diploma engineering, because that's not my domain. That's really appreciated. Very nice. Alhamdulillah. Okay. Munawwar Hashmi Sahab has already committed 4 sponsorships for this year. So I've noted down in his name 4 students to be sponsored, diploma and or paramedical, whatever. So if Munawwar Hashmi Sahab, ji. If I say one thing, I guess Sure. somebody else is. Yes, sir. Yeah. Is everybody listening? Yes. Okay. So one, I wouldn't say it's a concern, but one item that was discussed earlier is that when you look at the students, now we have a spreadsheet, we have the detail where the student come from and all that. And we do see that majority, large majority from North Bihar. And we don't see too many from, like, I would say, southern part of Bihar. Rizwan like, bhai. Patna, Gaya, Bhagalpur. Ji, Rizwan bhai answer karenge. I can give you the whole data. I can give you the entire data. I can give you the entire data so that you will be satisfied. But Rizwan bhai, aap comment करें इसमें. नहीं ऐसा, it's not like that. Like बहुत सारे मतलब के different parts से, पटना से भी बहुत सारे बच्चे हैं. अभी तो हम लोग ने 50 बच्चा जो है, we have established a new paramedical institute, जो FHERC फहीम हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, उसमें 50 बच्चे तो पटना के हैं डायरेक्टली. पटना के सीधे सीधे एक ही कॉलेज है, पटना के 50 है. एक ही कॉलेज में 50 बच्चे हैं. 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम पटना. और गया के आसपास गया में जो है वो गया डिस्ट्रिक्ट में 3 कोचिंग सेंटर है. तो तीनों कोचिंग सेंटर से बच्चे आएंगे. कल्पना चावला जी, आप कल्पना चावला कॉलेज की बात करते हैं, बिहार शरीफ की जो है हमारी 13 बच्चियां वहां पर है माशाल्लाह. 13 स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार शरीफ. तो ऐसा नहीं है, मतलब पहले था कुछ जो आपको मिली होंगे, आपको हमने एलोकेट किया होगा, तो मुमकिन है कि वो आपके पास नॉर्थ बिहार के बच्चे ज्यादा हैं. No, it's not my personal concern, but somebody raised that question. हाँ, तो कभी-कभी हम शेयर करते हैं. कभी-कभी हम ये शेयर करते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के कितने बच्चे हैं. ये हम कभी-कभी शेयर करते हैं. And one other thing on that topic, are we including the students from Jharkhand area? Yes. And call it Bihar Jharkhand. जी. That झारखंड में कोचिंग सेंटर्स हैं. झारखंड में कोचिंग सेंटर हजारीबाग, रांची, रामगढ़, धनबाद, डाल्टनगंज, धनबाद. Not the coaching. I'm talking about this in Bihar Anjuman. ये जो बच्चे आते हैं वो ज्यादातर वहीं से आते हैं ना. हमारे रबर कोचिंग सेंटर से बच्चे 10th पास करते हैं ना, उन्हीं बच्चों को हम भेजते हैं ना इसमें ज्यादातर बच्चे. इसीलिए वो जो है वो हमारा जो raw material है, we get our raw material for sponsorship for the diploma engineering or paramedical. We get our raw material from these rubber coaching centers. तो जहाँ rubber coaching center है वहाँ से ही बच्चे आते हैं. For example, I told you Gaya and around Gaya there are 5 coaching centers. इसका मतलब हुआ कि गया और उसके आसपास से ये ज्यादा बच्चे आएंगे बनिस्बत किसी और जगह से. अब यही आइडिया है. जैसे धनबाद से आएंगे
जमशेदपुर से नहीं आएंगे बच्चे, क्योंकि जमशेदपुर में कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, जमशेदपुर से बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन धनबाद से आएंगे, रांची से आएंगे, रामगढ़ से आएंगे, जहां जहाँ कोचिंग, हजारीबाग से आएंगे, डाल्टनगंज से आएंगे, इन सब जगहों से आएंगे। आप बात समझ गए ना? Okay. जी And do you have one in Ranchi also? जी रांची में भी है। Coaching. जी रांची में भी है कोचिंग जी। Okay. जी So that's good coverage. I mean, just almost covers the whole of gamut, Bihar plus Jharkhand, which used to be part of Bihar itself. So. all depends, it all depends upon somebody taking the initiative, क्योंकि हम लोग establish नहीं करते हैं। Like you, if you want to establish a coaching center in, for example, Jamshedpur, and you are connected with some of the people who will actually be taking charge of that center, then we have a guideline. So they will study the guideline, they will commit to the guideline, that they follow the guideline, and then if they keep on following the guideline, then in that case, that coaching center will ask for a sponsorship from us. So we'll, like in this today's meeting also, I'm asking some of our friends to sponsor some coaching centers. Like Bahaduddin Sahab said, he is sponsoring a new coaching center which is starting in Hilsa. We just heard that, So Bahaduddin Bhai will be sponsoring one coaching center in Hilsa at 15,000 per month or more. Similarly, we have Begusrai, we have one Samastipur, we have 3-4 coaching centers waiting for sponsors, which are ready running already, and we need 3-4 new sponsors for our coaching centers also at 15,000 per month. If it is not, if an individual is not capable of sponsoring alone, then he can join hands with a few of his friends, and then this sponsorship is possible. Anyway, so let's move on to other commitments. Anybody else is committing right now? Aftab Usmani Sahab has already committed. Amjad Khan Sahab has already committed. And here we have Shams from Norway. He has already committed. So we have Khalil-ur-Rahman, who has committed for the Rabbanah students. So we have a few of us already committed. Farhan Khan Sahab has already committed too. So Muazzam Arif Sahab has he's already sponsoring from past years. So anybody wants to take new students this year, please come forward right now. This is the time, please. Before we close. Arbab Bhai said one. Arbab Bhai says he wants to one. Sponsor. Fine, great. So anybody else, please come forward. This is your chance. Kashif said 2. Kashif says 2. Very nice. Arbab. And then we have Kashif. Okay. So I can Wasim here. I can take one more. Kashif Saab, I hope you will leave your number maybe in the comment section. I know. I janta hu unko. I will connect him. Okay, very good. Okay, Kashif Saab, two students. Okay, next. Yes. अभी कोई और भाई बोल रहे थे बीच में शायद? Yes, please come forward. Yeah, that was the same. I can take one more. I have 2. Maybe inshallah when we are closer, I can take one more, but I can commit one right now. Okay, Wasim Raza Sahib has been sponsoring students from before, but he wants to take one more. Alhamdulillah. Yahi chahiye Allah Taala. Just wanted to confirm that they are the zakat eligible, right? Yes, of course, because they come from poor, families. That's how they are in the rubber coaching centers. So only government school students. We are taking in rubber coaching centers only government school students. We are taking into a sponsorship of diploma engineering paramedical only government school students. So government school में जा रहा है मतलब गरीब है, private में tuition नहीं दे सकते. हाँ नहीं ठीक है नहीं, मैं सिर्फ confirm करना चाह रहा था क्योंकि मैं जो fund allocate करूँगा वो वहाँ से. But the people who are not really, very connected with homeland in the recent time, I think the one thing we also have to understand, we should understand, is that in Bihar, as Shakil Bhai said, the public education has collapsed. There's nothing really happens in the public system. So in this situation, if anybody who is sending their child to a public school, even anybody who actually can afford 2 or 3 times food, they are sending their kid to private school. So literally, if it's amazing that this metrics, right, that if you're sending your kid to the public school, you are talking about the poorest of the poor, right? Because right, उसके पास कुछ मजबूरी है, तो ये बच्चे को भेज रहा है वहाँ पे. So that filter that we have is amazing, right? I mean, I said they're really poor people that we are supporting here. So just wanted to sort of put that point. We have one more commitment. This is Muazzam.
I'll take one more, inshallah, and I'll also, like to commit my time towards mentorship, as Farhan Bhai was saying. Thanks to Farhan Bhai for being the voice of, maybe we sometimes need critical thinking, and maybe thinking in a different direction than all of us are thinking, right? So thanks for being that voice as well. Alhamdulillah. Muazzam Arif Saab has just committed for one more student this year, and there is one more commitment from, but name is not there. Name is not visible. It's M9 something, M9E or something like that. So if the brother can unmute. I can sponsor one more. Nayyar Azam, Mohammad Nayyar Azam, inshallah this year. ये आप ही का था वहाँ पे जो M9 करके आ रहा है? जी, I guess वही है जी. Okay. नैयर आजम भाई, दो नैयर आजम भाई तो नहीं है अभी इस वक्त ग्रुप में. यहाँ इस वक्त दो तो नहीं है, क्योंकि यूएस चैप्टर में नहीं, अभी एक ही है यहाँ पे अभी तो फिलहाल. M नैयर आईफोन is the one. That's me actually, yeah. Okay. तो जरा अपना नंबर बता दें तो, so that we don't miss, 469 363 5776. Just a minute. थोड़ा सा मुझे नोट कर लेने दें. I repeat, 469 363 5776. 5776. ठीक है, तो अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा. माशाल्लाह, I have two students from last year, I believe. माशाल्लाह. And I can sponsor one more this year, inshallah. यही तो, this is the spirit that is required for us to actually prove ourselves as an ummah and followers of our prophet and his companions, who were ready to give away all their wealth in the way of Allah in supporting the community to develop. Today we are in such a situation wherein, unless we have that kind of a spirit, Allah's help will not come. Therefore, it's very, very commendable for all of you to come forward with 1, 2, 4, 5, 10, 12 in a sponsorship. Mashallah. It's really very, very commendable. और कोई साहब हैं जो कमिट करना चाहेंगे? Yeah, this is Muhammad Amir Hussain. Yeah, so actually I have joined today and came to know all the details for. आपने सुना details? Yeah. So I believe I will sponsor from now. I will start from the beginning. I will sponsor at least one from this year. जी, अपना नंबर आप बता सकते हैं प्लीज? WhatsApp number 678 294 1332 +1. Yeah, +1. जी, बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह खैर. So Amir bhai is a neighbor. Actually, he recently came as he given the explanation. So he's in my society only. So mashallah, I gave some information about this program and I requested to join this. And mashallah, he's joining and coming up with this. Mashallah. May Allah accept it from you, brother Amir. असल में यही बड़ी बात है कि आप जो सुनते हैं उसको फिर आगे बढ़ाते हैं, तो उसका सवाब अलग से मिलता है. बिकॉज अभी मैंने एक जो इनविटेशन भेजा था मीटिंग का, उसमें मैंने एक हदीस कोट किया था जिसमें अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो किसी दूसरे को नेक काम के लिए जोड़ता है, उसको तो जो जुड़ा उसको सवाब मिला ही, जो जिसने जुड़वाया उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना अगले को मिले. तो ये चेन जो है, इस चेन में सोचें अगर 10 लोग एक चेन में हैं, सबको वो सवाब मिल रहा. अल्लाह ताला के कमी तो है नहीं. अल्लाह ताला के पास तो दुनिया का खजाना है, वो देने में कंजूसी नहीं करने वाला. हम लोग की तरह कंजूस तो है नहीं अल्लाह ताला. उसका तो वो तो देने में आगे रहता है हम लोग से. तो इसलिए उस चेन में जो लोग जोड़ने वाले, मैं उसी में ऐड करना चाहता हूं. शकील भाई, उसी में ऐड करना चाहती हूं. हम लोग यहाँ पे माशाल्लाह कितने लोग हैं जो 15 20 साल से हैं, मेरे जैसे लोग जो 25 साल. जी हाँ. इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी हम 15-20 लोग ही थे. अगर हम लोग सबको अपने नेटवर्क में देखें, और प्लीज बिलीव मी, I have gotten a sponsorship from people who are not even from Bihar. Yes. Right. So in your network, obviously you need to tap into the Bihari community, Jharkhand community, for sure. But even outside that community, if you reach out and explain to them in your gathering, in your iftar parties and all about what we do, everybody gets very impressed with the model that we have. So it will be very important if you can, please, if we need to grow. I mean, of course, scholarship is very अच्छी बात है. We need to grow really big in this. मैंने इनविटेशन भेजा था कुछ दूसरे ग्रुप्स में,
जो जैसे कर्नाटका का एक ग्रुप है जो कि यूके बेस्ड है, उसमें से 1-2 लोग ज्वाइन भी किए थे, बट आई थिंक बिकॉज इट बिकेम लेंथी सो आई थिंक दे लेफ्ट, बट मे बी दे विल कम बैक। ऑफ कोर्स या मैंने भी हमारे अपने जी बोलिए। नहीं, मैं ये कहते हैं अपने नेटवर्क को हम लोग आप सबको टैप करें, और अपने नेटवर्क में सबका नेटवर्क यहाँ पे सबके फ्रेंड्स हैं, काफी रिश्तेदार हैं, उसको बुलाएं, उनको इनवाइट करें। बिल्कुल। मैं इसी चीज को जस्ट एक्सटेंड करना चाहूंगा, जो प्रेजेंटेशन आपने शकील भाई वो ये प्रेजेंट किया था ना, अगर वो आप उसको फॉरवर्ड करते हैं तो प्रॉब्ली हम लोग और दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स को भी रीच आउट करके हम लोग उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि सी व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, और डेफिनेटली मतलब हम सब के 2-2 4-4 लोग कोई ना मतलब कनेक्शंस एक्सटेंशंस हो सकते हैं उसमें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। सो मेरे ख्याल से हम लोग यूएस चैप्टर है ना उसको जगाते हैं, थोड़ा एक्टिव बनाते हैं और मंथली मीटिंग वगैरह करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग भी इसी बहाने एक्टिव रहें। सही है। हाँ नहीं वो जरूरी है, एटलीस्ट कम से कम जो लोग एक शहर में हैं या एक आसपास में हैं वो लोग कम से कम इसी बहाने एक दूसरे से कनेक्ट तो हो सकते हैं। जी अब जैसे मैं और जावेद भाई एक साथ रहते हैं यहाँ पे शिकागो में जी, तो हम लोग तो अक्सर मिलते रहते हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से लोग अगर शिकागो, आई डोंट नो कि शिकागो में के आसपास के कोई और लोग हैं यहाँ पे, अगर हैं तो हम लोग कभी मिल सकते हैं, कुछ अफ्तार पार्टी कर सकते हैं, कुछ ईद पार्टी कर सकते हैं, तो इससे एटलीस्ट इंटरेक्शंस बना रहेगा। बिल्कुल। तो जावेद इकबाल भाई अभी है नहीं क्या, इस वक्त मौजूद नहीं है? वो अभी ड्रॉप कर गया, वो ड्रॉप कर गया। तो जावेद इकबाल भाई से बताएं कि जावेद इकबाल भाई जो है खुद जुड़े और उनके जो अलीगढ़ अलमी एसोसिएशन है उसको जोड़ें, IMF से कुछ स्पॉन्सरशिप दिलवाएं, इस तरह से जिन ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े हुए हैं उनसे कुछ स्पॉन्सरशिप जो है वो कोशिश करें दिलवाने की, ठीक है ना? तो आप लोग इंशाल्लाह अपनी स्टेशन में बात करें। तो अगर और कुछ नहीं है फिर इजाजत चाहेंगे हम लोग। नहीं हाँ चले, अल्लाह हाफिज। रिजवान भाई मैं आपको नॉर्थ अमेरिका ग्रुप में देख नहीं पा रहा हूँ। नहीं मेरा है, मैं आपको अरबा भाई कांटेक्ट करता हूँ, फिर हम लोग जो है विल Yeah, before we go, Shakil bhai, and everyone else, I will share one large group who are from on WhatsApp from Bihar. It's actually called Bihari group. So I will send that group listening to Brother Amjad, because he's and there are lots of people from tri-state area. I would say New York, New Jersey, Connecticut, and all that. So that may fetch a few commitments. And the second thing I want to salute Brother Shakil, that what a detailed data with full of stats you gave and explained so eloquently the condition of Muslims in the whole of India, and particularly Bihar also. And I was kind of surprised to learn that Dr. Ayendra Prasad partially was actually educated in a madrasa situation, which I guess that will be shared with the other secular group also. And the third thing which Shakil Sahib said, that Muslims replaced Bani Israel, and now it seems like we are being replaced by everybody else in the world. And we see that, we've been here in the last 20-30 years. All other ethnic community, all other people who mostly migrated to the Western world, and they're supporting their parent country. And those India is a good example. When we left India, it was nothing like what it is now. India is being included in G20 and all that. So we have to be mindful that we should help our community as much as we can. And alhamdulillah, we have opportunity, and we have our situation where we are placed in a situation where we can help our people. I saw some quote lately that when your standard of living goes up, your standard of giving should go up. Definitely, meaning that if you are better off now than before, mashallah,
you should think about how you can increase your gift taking, how you should increase, to help the people who are disenfranchised and who have been left behind. That's all I can say right now. जी बिल्कुल. तो आफ्ताब भाई आपकी तरफ से जो है वो लास्ट मैसेज हो, हम लोग फिर उसके बाद इजाजत लें. नहीं, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे. आई थिंक आपका जज्बा बहुत बहुत उसको जो है सलाम. और we all know what the situation. I mean, there's nothing hidden from all where we are in the society right now, what is going on in India, and what we need to do. आप लोग सब कुछ जानते ही हैं. My request would be that please add more people, invite more people, make this organization grow. Amjad bhai is sort of taking a lead. He's very motivated. We all support him, and tap into your network, bring more people into this one, and hopefully next year when we meet, maybe we'll have 50 people at least, not 20. Inshallah. Thank you. So thanks everybody. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग जो है मैसेज को पास ऑन करते रहें ताकि कारवां आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और ताकि उनके कनेक्शन से जो सवाब उनको मिलने वाला है वो सवाब आपको आपके नाम पे भी अल्लाह ताला दर्ज करें. वहाँ के खाता अल्लाह ताला के खाते में बेईमानी नहीं होती है. तो वहाँ पे तो जो है वो आपका एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, बस सवाब जारिया जो है वो मिलता रहेगा. कंटिन्यूस चैरिटी आपको सवाब मिलता रहेगा. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए. शकील भाई एक बार डिस्क्लोज कर दे आप कितने स्पॉन्सरशिप आज मिले हम लोग को, मतलब हाउ सक्सेसफुल वी आर. मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, उसको एक बार काउंट कर लेते हैं. इन टोटल शकील भाई से मैं बता दें सबको. टोटल वी हैव रीच्ड 215 बाय नाउ. 215 आज जो मिली हम लोग को टुडे इटसेल्फ. हां आज जो मिली है मनोहर हाशमी साहब से लेकर के, तो वी हैव रिसीव्ड 9 स्पॉन्सरशिप्स. माशाल्लाह 9 स्पॉन्सरशिप वी गॉट इन दिस मीटिंग. माशाल्लाह. गुड. ठीक है. ओके. अल्लाह हाफिज़. 11 हो गया. 11 माशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़. वेरी गुड. माशाल्लाह. वेरी गुड. ओके. बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. Yes,